We'll begin chapter 3 and we'll review when Prabhuji is there. Vishnu Sahasranaam Prabhuji is also. Hmm. Prabhuji, can we revise second chapter? Because Prabhuji, I am feeling Prabhuji थोड़ा लग रहा है मतलब एक मैंने वैसे भेजा था मुझे लास्ट वाला Prabhuji कुछ समझ नहीं आया था सेकंड चैप्टर का लास्ट पेजेस few pages of that. उसको आप पढ़ लीजिए, वो मुश्किल नहीं है। वो अव्यय के बारे में थोड़ा सा है और उसमें कई प्रकार के अव्यय दिए हैं, उनके यूजेज दिए हैं। तो उसमें वो जो दो प्रकार के अव्यय समझाए हैं, जो वाचक हैं और द्योतक हैं। एक रीडिंग ले लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं उससे पहले वाला Prabhuji एक मतलब किम ब्रह्मलिंग के बाद संशोधनी में जो आता है जैसे ये था इन द फर्स्ट सिनेरियो द स्व आदि इज डिलीटेड बाय ब्रह्मतः स्व मोर माहरः इन द सेकंड सिनेरियो द स्व आदि इज डिलीटेड बाय अंतरंग स्व आदेर माहरः एक पदात् वा आरंभे एंड इन द थर्ड सिनेरियो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स ऑफ द हम्म। सिनेरियो आर सह किम कृतवान किम रूपः एंड किम स्वप्न एतत् रिस्पेक्टिवली ये हम्म। वाला पैरा साइड. हाँ, तो इसमें जो सेकंड वाला है, अंतरंग स्वादिर महाहरः एक पदत्वारंभ, ये समास का सूत्र है, चैप्टर 5, नहीं चैप्टर 6। तो ये तो तभी समझ में आएगा। और ब्रह्मता सोम और महारथ तो आपको पता ही है। यस प्रभु. ये तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। हम्म. सेकंड एग्जाम्पल और सेकंड जो सूत्र दिया हुआ है वो चैप्टर 6 का है, वो बात की बात है। और जो अन्य अव्ययात स्वादिर महाहर है, इसका मतलब होता है कि अभी एक रूल है, देयर इज अ रूल इन संस्कृत, especially in Panini, it is mentioned सुप्तिङन्त पदम वाक्यम, which means किसी भी वाक्य में हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं, द वर्ड्स विच वी यूज इन अ संस्कृत सेंटेंस, श्लोक और पद्य गद्य वट एवर फॉर्म इट इज, so those words, whether they are nouns or verbs, they have to be either sup or ting, which means we can't just use the pratipadikams. We जी. can't just use the root or stem words. They have to be joined with the pratyas, the suffixes, and then only we can use either nouns or verbs. Okay, now the point is, now there are words like avyayas which come under the category of nouns, like cha, iti, tatha. So many are there. There is a complete list of that. So if we use the avyayas in a sentence, there is no harm because the meanings don't change for the avyayas. But someone can question that avyayas are not, we're not applying swadi to the avyayas. So how is the definition supting antapadam vakyam appropriate in this regard? You Yes. see? So just to facilitate that, just हम्म. to negate that possible uh, objection, they have created, Jiva Goswami have created the sutra Avyayat Swadir Maharaha, which simply means he will take an Avyaya, for example, cha, and we'll just put any suffix, su, au, jas, au, and we will simply delete the pratyaya. हम्म. It's just a formality. We are putting and deleting just to show that now it is Vishnupada. It's not Prakriti. So that is the usage of Avyaya Swadir Mahara. So just to make it officially married to the Pratyaya. That's the thing. Okay, and the second sutra, Antaranga Swadir Mahara Ek Padatva Arambhe. In simple words, it means Ek Padatva Arambhe means Arambha means beginning, and Ek Padatva means when we are beginning to make more than like two or more words into a single word. Compound or samasa means when we are turning two or more words into a single word, right? So when we are turning two or more separate Vishnupadas into a single Vishnupada, then what happens is Antaranga Swadir Mahahara. We delete the Vishnu Bhakti of all the internal words. We only have the Vishnu Bhakti at the last of the samasa. For example, Yes. Krishna Krishnasya Bhaktah becomes Krishna Bhaktah.
So Krishnasya, the Vishnu Bhakti of Krishnasya is deleted. So sometimes this kim is used in a samasa as the first unit, as a first word in a samasa. So in that case, um, we delete the Vishnu Bhakti of kim and we use the Pratipadikam only. So that's the meaning of the second one. ओके, तरंग स्वाति महारथ। अच्छा, मतलब जो पहला पद है उसके आरंभ में जो स्वादि उसका माहर हो जाता है। नहीं, आरंभ नहीं, पहले पद के अंत में जो होता है विष्णु भक्ति। आरंभ में स्वाति कैसे होता है? अंत में ही तो होता है। हाँ तो यहाँ आरंभ का मतलब यहाँ पर है कि जब हम एक पद बनाने चल रहे हैं, जब हम एक पद बनाने का आरंभ कर ठीक रहे हैं तब, तो ठीक आरंभ है, का प्रयोग उस अर्थ में हुआ है। ठीक है। एंड प्रभु जी, उसके नीचे जो थर्ड पैरा है, तो उसके लास्ट फिफ्थ पैराग्राफ, thus the acharyas explained that yat in भागवतम 1.1 means यस्मिन, ये वाला समझ नहीं आया था। कहाँ से? 10 द आचार्य एक्सप्लेन, ये वाला? यस यस प्रभु जी। अरे वाह, ये सूत्र तो मैं अभी 3 दिन पहले पढ़ रहा था और रिसर्च कर रहा था। सुपाम सुलुक, तो सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छ या अडा अध्या यज आलह, a sutra that describes, among other things, the look of the sups sometimes seen in the Vedas. Thus, the acharyas explain that yat in Bhagavatam means yasmin, that yat in Bhagavatam means yato namnah, ityadi ityadi. Okay, very nice, very good. So, so there is a sutra called Supam Suluk. Now, in Chandas Prayog, Chandas Prayog means in Vedic texts. Uh, क्या होता है? कभी कभी एक शब्द का, एक शब्द है मान लीजिए, एक विष्णु पद है, और उस विष्णु पद में मान लीजिए हम उसका साधन करने जा रहे हैं, प्रकृति और प्रत्यय साथ में रखा हमने। अब इस सूत्र से सुपाम सुलूक में क्या होता है? सुपाम मतलब सोजस अमोषस। हम्म तो होता क्या है, कभी कभी कुछ नियमों से, कुछ वैदिक व्याकरण के नियमों से आ, प्रत्यय का हर हो जाता है, उस विभक्ति का ही हर हो जाता है, विष्णु भक्ति का हर हो जाता है, लोप हो जाता है, और सिर्फ प्रातिपदिकम रहता है। ये एक पॉसिबिलिटी है जो हो गया लुक। लुक मतलब डिलीशन। तो महारा, इस इट इज महारा। हाँ, लुक मतलब महाहर, कंप्लीट डिलीशन। हम्म तो इस सूत्र के दो अर्थ हैं, सुपाम सुलुक जो सूत्र है इसके दो अर्थ हैं, एक है सुपाम सु और दूसरा है सुपाम लुक। तो अभी हम पहले पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम दूसरे पे चर्चा करते हैं। सुपाम लुक मतलब कभी कभी कुछ प्रयोगों में उस विष्णु भक्ति का, उस सफिक्स का, उस प्रत्यय का क्या होता है, महाहर हो जाता है, किंतु अर्थ वही रहता है, या अर्थ कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। ये थोड़ा वैदिक व्याकरण वाला प्रयोग है, तो इसलिए यहाँ जैसे यस्मिन, यत कभी यस्मिन होता है, यत कभी ये होता है, यत कभी वो होता है ना? तो ये हाँ, वैदिक व्याकरण के नियम की थोड़ी चर्चा हो रही है। आप इसको चैट जीपीटी में थोड़ा सा ट्राई करना, मैंने 1-1.5 घंटा लगाया था इस सूत्र पे 3 दिन पहले। सुपाम सुलुक, वो अच्छे वो से थोड़ा बता समझा। देता अच्छी तरह। अरे आपको आनंद आ जाएगा। इस पे चैट जीपीटी पे भी ट्राई करना और को पायलट पे भी ट्राई करना, जो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है। यस यस। और प्रभु जी, पर ये दिस इज नॉट वैदिक ना, दिस भागवतम, दिस इज लौकिक। पर फिर भी कुछ कुछ प्रयोग हैं, क्योंकि भागवतम में भी, अब देखिए भागवतम में क्या है ना, वेदांत सूत्र से कंपैरिजन है, जो ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र है। अब वेदांत सूत्र तो वैदिक है एक प्रकार हम्म से, क्योंकि उसमें देखिए हर एक चीज वैदिक ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेफरेंसेस है वो वेद से ही आ रहे हैं। हम्म अब जैसे अब मैं पढ़ ही रहा था, जो जीव गोस्वामी जी का जो तत्व संदर्भ है, उसमें वो यही सिद्ध कर रहे हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन महाभारत एंड वेदस। वो इतना बोलते हैं कि महाभारत वेदों से श्रेष्ठ है, इतना भी बोल देते हैं वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि महाभारत भी वही कार्य कर रहे हैं जो वेदों में हो रहा है। ये तत्व संदर्भ में है, आप जब भी तत्व संदर्भ पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वही वेदों की वाणी, वही वेदों के मंत्र, वही वेदों के शब्द बहुत सरल तरीके से प्रयोग हुए हैं। अब गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है ना? यस।
अब उसी की व्याख्या भागवतम में हुई है, या वो उसी का व्याख्यान है भागवतम, राइट? जी। तो वही धीमहि शब्द, जो शब्द है सत्यम परम धीमहि या तन्नो धियो प्रचोदयात्, तो इस प्रकार से वही वैदिक ग्रंथों से शब्द लिए गए हैं कई सारे, और उनको हम्म। समझाया। तो एक्चुअली देखा जाए तो सारा का वहीं से आ रहा है ना, वेदों से ही आ रहा है। तो जब व्यासदेव जी ने देखा कि त्रयी न श्रुति गोचरा, कि जो शूद्र, कौन कौन त्रयी मतलब स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्रियां, शूद्र, और जो ब्रह्म द्विज हैं, द्विज मतलब नॉट जब वो, ब्राह्मण्स। हाँ नॉट ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल में, पर वो फॉलो नहीं कर रहे या निम्न योनि वाले, तो उनके लिए वेदों का अधिकार नहीं है, तो उनके लिए फिर महाभारत आदि की रचना हुई। किंतु महाभारत पंचम वेद कहलाता है। पंचम, यस। तो इस प्रकार से है, तो सब कुछ वेदों से ही आ रहा है। तो इसलिए कुछ कुछ कहीं कहीं जगह पे ये प्रयोग दिखते हैं हमें। इनको आचार्य आर्ष प्रयोग करके भी छोड़ देते हैं। आ, भागवतम में टीका में आर्ष प्रयोग, ऋषि ऋषि मतलब शब्द से बना आर्ष। के हाँ मतलब इसका अर्थ हो गया कि ऋषियों ने ऐसा प्रयोग किया तो इसलिए हम इसको मानते हैं, इसका ये अर्थ हो गया। उसको उसको ग्रामेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे के इंटरेस्टिंगली हम एक दिन जब पढ़ रहे थे 2015-16 में, जब मैं पढ़ रहा था हरिनामामृत, तो एक दिन मैं अपने क्लास में गया, तो वहां पे 7-8 जने बैठ के एक शब्द पे चर्चा कर रहे हैं कि ये बना कैसे। हम्म। और वो शब्द था धीमहि, सत्यम परम धीमहि का धीमहि अच्छा। 1.1.1। और हम सब ने 1 घंटा लगा दिया, और किसी को पकड़ में नहीं आया कि वो धीमहि बना कैसे। हम्म। उसका हमने मूल धातु निकाल लिया, किंतु वो किसी भी सूत्र से धीमहि नहीं बन रहा। तो अच्छा। फिर हमारे गुरुजी आए, उन्होंने देखा कि भाई बड़े प्रयास, बड़ी मेहनत चल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि धीमहि आर्ष प्रयोग है। के ये इसको ग्रामेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, इसको रूढ़िवादी या फिर आर्ष प्रयोग का शब्द मानना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा, फिर हमारा हमारा फिर सॉल्यूशन हो गया। तो आप सोचिए, तो इस तरह से प्रयोग है भागवतम में भी। मतलब काफी श्लोकों में आता है ये, हाँ भागवतम मतलब में। आ जाता है, इतना भी रैम्पेंट नहीं है, इतना भी फ्रिक्वेंट नहीं है, पर है। ओके। हम्म। इसलिए प्रभु जी, जैसे ये फर्स्ट श्लोका है, तो ये हम्म, पूरा मतलब अगर हम जैसे हमने इतना पढ़ा ये विष्णु भक्ति के बारे में, तो हम भी हमें दिक्कत आएगी डिकोड करने में एक तरह से। नहीं, ऑलमोस्ट नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, तो वो तो टीका वगैरह देखना पड़ता है। अब जैसे आप भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का वो देख लो, अन्वय देख लो साथ में। हम्म। हाँ उससे बहुत हेल्प मिल जाती है, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। टीकाएं देख लो। एक्चुअली टीकाओं में तो स्पष्ट ही हो जाता है, क्योंकि आप सोचो हर एक श्लोक पे 10-15 टीकाएं हैं। हम्म। कोई ना कोई किसी ना किसी शब्द पे तो छूता ही है, मतलब ऑल टुगेदर आपको हर एक शब्द की व्याख्या तो मिल ही जाएगी किसी ना किसी टीका में। तो स्पष्ट तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी वैसे कुछ भक्ति चीजें। सिद्धांत, हाँ हाँ इस बोलिए। वैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने वो अन्वय क्यों किया था? उन्हें तो संस्कृत बड़ी अच्छी तरह आती थी। हमारे लिए किया था ना। अच्छा। वो अन्वय हम सबके लिए किया ना, वो तो परम भागवत है। अच्छा, इसलिए किया था। हमारे लिए प्रिंट, उन्होंने प्रिंट किया, देखो कितना, कितनी मेहनत की उन्होंने, प्रॉपर। हाँ हम सबके लिए किए। बस वो बंगाली लिपि में है, तो बंगाली लिपि सीख के बढ़ो आगे, पढ़ो। बहुत आनंद आता है और बहुत क्लैरिटी होती है। तो ये है। और कुछ। एंड एंड प्रभु जी, इन द नेक्स्ट जैसे काफी अव्यय बताए गए हैं, तो उसमें से तो काफी देखे ही नहीं। जैसे एक तो था सायं, मानक। मैंने एक्चुअली मार्क किए जो मुझे नहीं पता ये अव्यय हैं या इसका मतलब आपके क्या है। पास आपके पास अव्यय की लिस्ट है? मेरे पास है प्रभु जी वो वेद चैतन्य वाली, पर उसमें सारे तो नहीं है जितने यहाँ पे नहीं नहीं लिखे हुए हैं। नहीं, मैंने प्रोवाइड की है आपको किसी को? नहीं प्रभु जी, नो। एक सेकंड, मेरे पास है जो जीव गोस्वामी की अव्यय लिस्ट है, 1 सेकंड। विद मीनिंग्स। आ विथ मीनिंग से देखना पड़ेगा।
ये लीजिए, मैंने ग्रुप में डाली, आई थिंक मीनिंग्स भी है, राइट, मीनिंग्स भी है, मैंने ग्रुप में डाली, अब देखिए इसके। अच्छा, ये वो पीछे वाला, ओके ओके, जो पीछे इसके है। ये देखिए, ये क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, अल्फाबेट वाइज। तो हम्म। अब वे हैं, उनके संस्कृत मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, तो ये काफी इलेबोरेट है। ओके प्रभु जी, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि जैसे ये अगर कोई इतने व्याकरण पढ़ रहा है, तो ये मत्स्य अवतार प्रभु ने ये रोमन ट्रांसलेशन में क्यों लिखा, रोमन स्क्रिप्ट में क्यों लिखा है ये? किस में लिखना चाहिए था? वही देवनागरी। हमारी इंग्लिश, इस्कॉन की प्राइमरीली ऑडियंस इंग्लिश है ना, और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आउटरीच बहुत ज्यादा हो गया इससे। देवनागरी में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देवनागरी एक रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश आज के दिन इंटरनेशनल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रयास ठीक ही है कि उन्होंने इंग्लिश में किया, और सेकेंडली गोपी पुरंदर प्रभु जी और मत्स्यता प्रभु, वो स्वयं ही फॉरेन बॉडीड थे, आई मीन, जी। मैं बाह्य तौर पे बोल रहा हूँ, है हम्म। ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका इंग्लिश में ज्यादा बनता था। अब देवनागरी उनको कितनी आती थी या हिंदी कितनी आती थी, आई डोंट नो, क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेशन भी तो प्रोवाइड किया ना। जी। मेन तो ट्रांसलेशन का खेल है, अब हिंदी में करते, देवनागरी में करते, तो फिर हिंदी ट्रांसलेशन देना पड़ता, तो वो हिंदी वाला पार्ट फिर हमारा बनता है अभी देखा जाए तो ये है, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास मेहनत करके हमें दे ही दिया। डन प्रभु जी। और कुछ किसी भक्त का, बाकी इसमें देखिए मेहनत करने वाली बात है, जितना अधिक आप शास्त्रों को छांटते रहेंगे, टीकाओं को या श्लोकों को, उतना आपको समझ में ज्यादा आता रहेगा। और साथ में डिक्शनरी चलाते रहिए, हम्म। शब्द खो शब्द खोजते खोजते प्रातिपदिकम खोजना है, ये वो, मतलब डिक्शनरी साथ में चलाते रहिए, कभी भी आलस नहीं करना, तब तब आनंद आएगा। एंड प्रभु जी, एक्चुअली मैंने आई वांटेड टू शेयर दैट आई, मेरे पास ना चाणक्य नीति है, तो मैं एक बारी दोबारा देख रहा था, तो उसके में श्लोक अच्छी तरह समझ लगते हैं मेरे ख्याल, दे आर नॉट पोएट्री वाइज, दैट्स व्हाई। आप भेजिए एक श्लोक, फोटो खींच के व्हाट्सएप में भेजिए, जो भी आपको चर्चा करनी है। यस प्रभु जी, एक मिनट। फोटो थोड़ा क्लियर लीजिएगा। हम्म, ये रहा प्रभु जी। जैनिता जैनिता प्रभु जी तो एज अ गेस्ट आए हैं आज, लग रहा है साइलेंट I'm waiting for you to start chapter 3. अच्छा अच्छा, हाँ, पर प्रभु जी के कुछ डाउट्स हैं, तो वो भी सही है, डाउट्स बनते ही हैं, है ना, आपके भी डाउट्स हों कुछ, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपने भेजा प्रभु? यस प्रभु जी। हाँ, एक सेकेंड, ये लीजिए प्रभु जी आ गए। अब हम चैप्टर 3 भी स्टार्ट कर देंगे, मैं प्रभु जी की वजह से नहीं कर रहा था, प्रभु जी हाँ। तो यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिर् न च बांधवाः न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासम तत्र न कारयेत्। तो इसमें समस्या क्या है? ये तो सिंपल संस्कृत है। यस प्रभु जी, नहीं समस्या नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, मतलब मतलब भागवतम से और थोड़ा भगवत गीता से भी थोड़ा मतलब इजी लगा। हाँ, ये इसमें इजी है संस्कृत ना थोड़ी, जैसे आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, उसमें भी थोड़ी संस्कृत इजी है, कंपैरिजन करें भागवतम से तो। वैसे वाल्मीकि प्रभु जी, रामायण का भी, ऐसा कोई अलग होता है या फिर मतलब ऐसा क्यों, दोनों तो लौकिक ही है वैसे भी। अब चाणक्य पंडित कलयुग में हुए ना, जी। आई थिंक मैं सही हूँ या गलत मुझे पता नहीं, चाणक्य कलयुग में पंडित तो मतलब 2000 साल कलयुग के, पहले। हाँ 2000 साल पहले हुए, मतलब इस कलयुग के ही है। और भागवतम गीता आप देखें तो उनका पहले का है, हम्म। मतलब एक, तो अब ऐसे तो कोई ये भी कह सकता है जीव गोस्वामी तो उनके बाद भी आए, पर उनकी संस्कृत क्लिष्ट है, आई थिंक ऑथर वाइज डिपेंड करता है कि हर एक ऑथर कैसे प्रेजेंट करता है, क्योंकि जितना सिंपल सरल रखेंगे उतना उतना वाइड स्प्रेड, उतना वाइडली एक्सेप्टेड होगा हमारा कार्य। हाँ, तो
तो आई थिंक ठीक ही है। अब वाल्मीकि रामायण भी इजी है, पर अब तुलसीदास जी की रामायण उससे भी इजी है। तो वो लोगों में ज्यादा प्रचारित है। हम्म। वो संस्कृत भी नहीं है और वो सरल भी है, उसको हम गा भी सकते हैं। उस पे कुछ भी हो सकता है रामचरितमानस पे। तो हालांकि वाल्मीकि रामायण अपने आप में बहुत सरल है संस्कृत भाषा के दृष्टिकोण से, किंतु उससे भी सरल तुलसीदास जी की रामायण है। और वो संस्कृत भी नहीं है, तो जो ज्यादा सरल होता है, प्रामाणिक होता है, तो वो ज्यादा स्वीकार किया जाता है। अब प्रभुपाद जी की गीता ही देख लो ना, या भागवतम देख लीजिए, या जो भी प्रभुपाद जी के भाष्य हैं, वो इतने सरल हैं तभी तो इतने वाइड स्प्रेड है। वरना उन्हीं चीजों को गीता प्रेस में देखिए, इधर देखिए उधर देखिए, सरल नहीं है, बहुत क्लिष्ट है। आप मध्व संप्रदाय में जाए, श्री संप्रदाय में जाए, उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती। उनकी हिंदी हिंदी नहीं, आदि संस्कृति होती है वो। मैं जो गौड़िया मठ से परम पूज्य नारायण महाराज जी की कभी कभी बुक देखता हूँ हिंदी वाली, आप उनकी हिंदी चेक करो, आप उनकी आदि ही संस्कृति होती है वो समास के शब्दों को समास के शब्दों ऐसे ही लिख देते हैं, उसका ब्रेक डाउन नहीं करते हिंदी में। अच्छा। हाँ, तो मतलब प्रोपात जी का इसलिए सरल है, प्रामाणिक है, इसलिए उसकी एक अच्छी आउटरीच हुई, और उसका उसका रिजल्ट हम सब ही हैं, हम जो बैठे हैं यहाँ पे, सरल। तो ठीक है। तो प्रभु आपका कुछ प्रश्न है चैप्टर 2 से, विष्णु सहस्त्रनाम प्रभु जी, कुछ जिज्ञासा? Mm, नहीं है तो हम फिर आज yeah, few questions are there, but those are usually after studying 2-3 times, I get the answers. अच्छा अच्छा। Prabhuji, I have a स्वयं स्वयं Uh, स्फुरत्य था। Prabhuji, I have a question. यस प्रभु जी। This is in page number 198, Sutra number 182. वेट वेट 198। ओके। So in the Britti, it is being said in the Britti. So then when the effect disappears, the word again has a dental varna in its midsection. In the dative rish, the effect of cha and the cause was bottom cha. So how was this cha was the cause? सस्य षष्ठ वर्ग योगे, देयर इज वन सूत्र, सस्य षष्ठ वर्ग योगे, स becomes sh when ch वर्ग is next to it, सस्य षष्ठ वर्ग योगे, so that's why ch was cause and effect was sh, सस्य षष्ठ वर्ग योगे। Okay, you can check the sutra number, सस्य षष्ठ वर्ग योगे। Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Okay, so begin the third chapter. We'll review the exams answer sheets maybe in the next session. Uh, I need to go to Mathura railway station to drop someone, so we'll begin chapter 3. And Prabhuji, actually, I wanted to say the test, especially of Sandhi and the Vishnu Janant, was a little easy. विष्णु जनांत Yes, Prabhuji. कृष्ण नाम थोड़ा ढीला टफ था। था, मैं थोड़ा ढीला था। Chapter 3, Akhyata Prakaranam. So, by Krishna's mercy, Jiva Goswami's mercy, we uncovered Sangya Sandhi Prakaranam. Chapter 1, we uncovered Shabda Prakaranam. Chapter 2, and it's Akhyata Prakaranam now. This is the longest chapter, and it is said that one who can complete this chapter can complete grammar easily. So, this is the test point of for any student actually. This is actually the longest one. With a lot of subsections, subsections in it. And this is also the backbone of all grammar because, as I said earlier,
Even the nouns in Sanskrit are formed from verbal roots. Even the nouns are made from verbal roots, what to speak of the verbs. So verbal roots are the most important things or important thing in Sanskrit to know. So some call it akhyat, some call it dhatu, some call it kriyapada. Different names: akhyat, dhatu, kriyapada. So now the Vishnu padas produced from dhatus are going to be described. Atha dhatu jani Vishnu padani. In chapter 2, it was Atha nama jani Vishnu padani, if you remember. Those were the Vishnu padas which were born from the nouns. These are the Vishnu padas which will be born from dhatus. Now in chapter 2, we had two sutras. Prakriti purva pratyay paraha, right? Prakriti purva pratyay paraha. So there were two kinds of prakritis and four kinds of pratyas, if you remember. Yes. Two kinds of prakritis were noun and verbs. Hmm. And pratyas are four kinds: swadis, tibadis, kridant pratyas, and tadhit pratyas. So in chapter 2, we studied the combination of the noun prakriti, the pratipadikam, plus the swadi pratyas. And we saw how the different forms are made for the nouns. Now in chapter 3, we will see the combination of the verbal roots, the verbal stem, plus the tibadis, the second kind of suffixes, the tibadis. They are called tibadis because it begins with tip. The first suffix is tip. And for your kind information, we had 21 suffixes in chapter 2. You can say 24 because Sambodhana was also there. Here we don't have many, we just have 180 suffixes. 180. 180 suffixes. Tipta santi siptasta mimbasmaste atente se ate devevamai ityadi ityadi. So but it's actually fun doing dhatus also, if one is really interested. So here we will combine the verbal suffixes with the verbal stem, verbal root, and then we will have the dhatu jani Vishnu padani, the Vishnu padas which are verbs like karoti, pivati, hasati, ityadi ityadi. Prabhu, you are using the word stem. So the stem and the root, they are the same. They are same. Actually, I keep on saying root, but when I see and study the English Sanskrit guides in English, so they use the word stem also a lot. So I try to implement that also, just to go with the flow. Anyhow, I'm not that great in English. Anyhow, English is boring, bekar language. I was talking to a professor from Africa, one Mataji, god sister of mine. We were discussing several Sanskrit words and their equivalents in English. And there are no equivalents in English. No equivalents. She kept on thinking, and she couldn't trace even a single word. And I was like, then you invent some English word, you're a professor. So, Like devta. okay, Devata. I don't remember which word we were discussing. Day before yesterday, we were discussing. But yeah, we reached at a conclusion that there is no equivalent uh, of many words in Sanskrit, in English, but to speak of other languages. Then, now, see, in English, they call them demigod. If we translate it literally into Sanskrit, it would be Ardhadev. It would be Ardhadev or it would be Upadev. It's like president, vice president, Rashtrapati, Uparashtrapati. So if we translate English demigod into Sanskrit, it would be either Upadev or Ardhadev. So demigod or vice god, demigod.
Semi, or they could have said semi-god. Semiconductor, semi-god, demigod. Okay. So Bhu-sanantadyah dhatavah. Bhu and so on and Sananta and so on are called dhatus. Um, so we'll read the Sankshodhani. In this sutra, the two kinds of dhatus are mentioned. One kind is primary dhatus and another is secondary dhatus. Okay, we have primary dhatus and we have secondary dhatus. They are referred to by listing a specimen from each group. Okay, so there are primary and secondary two kinds of dhatus. Now, Bhu Sattayam, the first dhatu in Jiva Goswami's Dhatu Patha. Now, Dhatu Patha is a list of verbal roots, which is compiled by Jiva Goswami himself. Just like he has created that PDF, or sorry, the list of all the Avyayas. So he has also created a Patha, a list of all the verbal roots. That's there. I'll provide it to you, or it's there maybe in the Parishishta of this book. It must be there at the end of this book. So that is called Dhatu Patha. So the very first Dhatu mentioned in that list is Bhu, the Dhatu Bhu. So that's why it begins with Bhu Sanantadya. You know, it begins with Bhu. That all the Dhatus beginning with Bhu are called Dhatus. Now, when we are referring to nouns, like nominal roots, we use the word Pratipadikam, right? Pratipadikam. We don't use the word Pratipadikam for verbs. For verbs, the verbal stem or the verbal root, we call them dhatus. Nominal root, they are called Pratipadikam. Verbal root, they are called dhatu. Just to make it clear. Pratipadikam and dhatu. So Bhu is the first dhatu mentioned. That's why it's mentioned here. And then there are secondary kind of dhatus also. Whereas Sananta is an example of secondary dhatu. I will discuss about this secondary dhatu after covering some sutras. It will be more clearer afterwards. Okay. So there are almost like around 2000 primary dhatus listed. 2000 primary dhatus listed in the dhatu part of Panini. But Sankshodhani says Jiva Goswami, he selects the main ones, and we have around 1100 in our dhatu part, in Jiva Goswami's dhatu part. Now all the dhatus, they are divided into 10 class or 10 groups. Those groups are called ganas. Gana, like Ganapati Gana. Gana. First class, second class, first class, second class, third, fourth, fifth, and like that. And each Gana, so the dhatu which is situated in the front of each Gana, or the beginning of each Gana, so that Gana is named by that dhatu. For example, the first Gana, the first class is called Bhuadi. Because the first dhatu situated is Bhu, so Bhu Adi becomes Bhuadi. The second Gana, the first dhatu is Ad. So because Ad is the first dhatu, so the Gana itself is called Adadi. You see? So they are named according to the first dhatu situated in their list. Okay? We'll discuss more about this. Now, the sutra is Dhatuhu. This is, we have to carry it forward. Adhikar Sutra. So the word Dhatuhu is to be added in the subsequent sutras. Okay, let's just move on. So before discussing the next 10 sutras, it is necessary to first give some preliminary information about verbal suffixes in the Sanskrit language. As explained previously in Vritti 87, that was Prakriti Purva. The Vishnu Bhaktis are of two kinds, Swadi and Tivadis. The Swadis are nominal suffixes, while the Tivadis are the verbal suffixes. We already discussed this. Tivadi is a general term for the 180 pratyayas, which will be classified into 10 groups
of 18 each in the next 10 sutras. First of all, the dhatus are also divided into 10 groups, which are called ganas. So that is the verbs. Now the verbal suffixes are also classified into 10 groups. Verbs are also grouped into 10, and verbal suffixes are also classified, divided into 10 groups according to tenses: past tense, present tense, future tense, ityadi. And in each group, there are 18 suffixes, 18. And 18 into 10 is 180, simple mathematics. So the 18 pratyas of each group are further divided into two categories. Now 18 pratyas in each group, they are further divided into two groups or two categories. One is Parapada. In Panini, they call it Parasmai Pada. And another is Atmapada. In Panini, they call it Atmane Pada. Like if you go in front of any Panini studying student or teacher, and if you don't say Parasmai Pada, you say Parapada, they will laugh at you. If you say Atmapada and not Atmane Pada, they will be like, what? These words are alien to them. So yes, they are divided further into Parapada, Atmapada. So Parapada 9 suffixes, Atmapada another 9 suffixes. In simple words, you can understand this Parapada and Atmapada concept to be like active and passive voice. In very simple words, I'm saying. Active and passive voice. Krishna is eating fruit, active voice. In schools, we used to do this. The fruit is being eaten by Krishna. Passive voice. So Kartri Vache, Karmani Vache. We'll discuss about this again ahead. Okay, so we have 10 ganas, 10 classes for verbs. Then again, we have 10 groups for the verbal suffixes. And again, those 10 groups are further divided into 2 for the verbal suffixes. So we have 9 suffixes in one group, like Parapada 9, Atmapada 9. So 18 in one. So throughout the Akhyata Prakarana, the following table will be used to list the 10 groups of Tibadis and the conjugation of verbs. So this is the pattern we have to become used to. We are used to those 21 or 24 form pattern table. But this is the pattern now here. So this is Ekvachana, singular, dual, plural, like in nouns. And then we have first person, second person, and third person. So first person singular, first person dual, second person. So the forms, the verbal suffixes, everything will be declined in this table order in this chapter. Okay. Now I'll just give you homework and explain these sutras in the next class. Actually, I will explain this after you memorize and recite, because these are all suffixes. Unless everyone memorizes the suffixes, there is no point moving ahead. So Sutra 262 onwards till from 262 till Sutra 271. So from 262 till 271, all the suffixes are mentioned, 180. You have to memorize all these suffixes. I'm not giving any deadline. You decide, because even if one person doesn't memorize, we will not move ahead. So I'll just explain. So the first one here, 262 Sutra. Tatra prayo vartaman kale tibadayoštadashachuta namanah. So these are the 18 suffixes which are used for present tense. 9 in Parapada, 9 in Atmapada. So you have to memorize in this pattern. Tip, tas, anti, sip, thas, tha, mip, was, mas. And you have to also memorize their names. So this first one is called Achyuta. These pratyas are called Achyuta pratyas. So Achyuta and Parapada. So if I'm asking for the first table, so you will recite like this. Okay, Achyuta Parapada. Okay, Tipta Santi, Siptastha, Mip, was, mas. Right? Because there will be
20 tables here. 9 into 20, 180. So how will I ask you? How will you recite? So we have to have some grouping. So you have to memorize the names and Parapada, Atmapada, and then you memorize. So Achyuta Parapada is Tiptas Anti, Sipthastha, Mipvasmas. Similarly, Achyuta Atmapada is Te Ate Ante, Se Ate Dve, Evahe Mahe. So like that, you have to memorize all the pratyas. So, or we can even do one thing just to make it easy. Memorize the first 5 groups. So that is 262, Sutra 263, 264, 265, and 265 and 267. Memorize these first 5 till 267. I'll explain, and then for the next class, you can memorize other to make it easy. Oh, we'll stop here. If anything you want to say. Prabhuji, what is the, you said that Parapada and Atmapada is active and passive voice. Is that the meaning? Yeah, in a very basic sense, just active and passive voice. It's more complicated actually, but for the timing, active and passive. Actually, to be frank, no one has really explained, as far as I know, Parapada and Atmapada, really like into depth. So we can do some research on this Parapada, Atmapada. And Prabhuji, what is difference of third person, second person, and first person? Okay, so first person is talking about myself, like aham. Second person is I'm talking to you. So for me, you are second person. Krishna was talking to Arjuna. Arjuna is second person for Krishna. And third person is I'm talking to you, and let's say I'm talking to you about Prabhupada. So Prabhupada becomes third person. So first, second, and third person. Thank you, Prabhu. Anything else? यस प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मैंने क्या पहले एक एक्सेल शीट बना के रखी थी जिसमें मतलब मैंने देवनागरी में सारे जो प्रत्यय थे वो रखे हुए थे मैंने देवनागरी में। तो बट आई वाज सीइंग जब मैंने वो दूसरा पहले लगाया था पाणिनि वाला, तो मैंने चलो ये अच्छे से तो मेरी इसकी प्रैक्टिस हुई नहीं, पर थोड़ा बहुत था। तो उसमें कुछ जो उन्होंने प्रत्यय बताए थे, तो बीच में जैसे एक विधि लिंग के साथ ये मैच नहीं करते, और कुछ उन्होंने बताया था एक अब मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। उन्होंने आप एक और उसको बताया था, हाँ। उसको रहने दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, इंडिकेटर लेटर्स में डिफरेंस है ना, कभी कभी। तो उनको छोड़ दीजिए, आप इसको इस पैटर्न को कर लीजिए, वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, डन प्रभु जी। मैंने देखे हैं कभी कभी, जैसे इंडिकेटरी लेटर्स में डिफरेंस है, कभी कभी कुछ प्रत्यय में भी डिफरेंस है। तो जो हमारे वाले हम वो पढ़ रहे हैं, तो उसको आप कर लीजिए। एंड देयर वाज अ पास्ट टेंस प्रभु जी, जो मतलब काफी इतना यूज नहीं होता मेरे ख्याल, इट वाज भूतेश्वर लंग नहीं नहीं, लंकार। सब यूज होता है, सब यूज होता है। नहीं मतलब वो ये कहते जैसे जिसमें बभूवह वाला जो था, वो उस नहीं कहते नहीं, उसके सब प्रत्यय चेंज होते रहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा था कि उसके प्रत्यय मतलब मिक्स प्रत्यय होते चेंज रहते होते हैं। हैं। मतलब एक डेफिनेट नहीं, उसमें काफी चेंजेस आते रहते हैं सूत्र के, ऐसे उन्होंने कहा था। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे उसको। है अभी काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, इसमें बहुत आनंद आने वाला है। आप मतलब बहुत मेहनत आप लोग की होने वाली है मैं पहले से बता दूं। चैप्टर 2 तो ट्रेलर था, टू बी फ्रैंक इट वाज जस्ट अ ट्रेलर। मूवी तो ये है चैप्टर 3 हम्म। तो तैयार रहिए आप सभी Prabhu, when will ठीक be है। our next class? नेक्स्ट क्लास व्हेन विल वी डू, आप सब बताइए कब करनी है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो नहीं, नॉट ऑन संडे। whenever you memorize pratyas, let's do it on Monday. विद दिस मंडे।
Yes, Friday, Saturday, Sunday, Monday. डन प्रभु जी, ठीक है। So by Monday you memorize and will listen. प्रभु जी वो अन्वय, कैन वी सी? No. I have to go to Mathura to drop someone. So not today. ओके प्रभु जी। Yeah. एंड प्रभु जी इफ पॉसिबल टुमारो, क्योंकि काफी थोड़ा पेंडिंग हो गया। No, see, in the next class, I just need to listen all the sutras or all the suffixes, and then time तो बचेगा ना, तो उसमें आप हम डिस्कस कर लेंगे वो अन्वय वगैरह आपके। डन प्रभु जी। तो मंडे को डिस्कस करते हैं। आप अपना करते रहिए प्रैक्टिस, मंडे को आपके सारे डिस्कस करेंगे। Prabhuji, and also you had said that you're going to share something basically. When Something like? something by No, which, no. I had said that we will start some study of Tika, some commentary in the class okay. after we complete chapter 2. We will start. Okay. Hare Krishna. Jai. प्रभु जी Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.